Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you in the written work of biology for grade 8. Today we start question number 4 in unit 2. So first of all, reading your page. आप लोग पेज को कैसे रेडी करोगे? डेट लिख के आज का, ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने मार्जिन लाइन भी लगाना है. मार्जिन लाइन लगा लिया सबने, इंस्ट्रक्शन सुन ले सब. आप लोगों ने ब्लू से हेडिंग देना है कैपिटल लेटर में. जिन चीज़ों को मैंने ब्लू से लिखा है वो आप लोग भी ब्लू से लिखोगे. माइंड मैप के आउटलाइंस पेंसिल से, अंडर राइटिंग मार्कर से, ठीक है. हर एक हेडिंग को डबल अंडरलाइन करोगे और जब क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा तो फिनिशिंग लाइन लगाओगे. इसके अलावा प्रोमिनेंट वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए ब्लैक मार्कर यूज करोगे. जहां पर मैंने ब्लैक वर्ड्स को हाईलाइट किया है वहां पर आप लोग ब्लैक मार्कर यूज करोगे. तो ये तो हो गई इंस्ट्रक्शंस. तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं. क्वेश्चन 4, कंट्रोल ग्रुप इज इम्पोर्टेंट फॉर साइंटिफिक स्टडी. हाउ? आंसर, माइंड मैप. This is mind map, control group, making decision, isolation, population from variable. Now let's move towards the control group. Control group is that group which is compared. यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट बता रही हो कि आप लोग एक लाइन में 4 या 5 वर्ड्स लिखोगे. ये तो टाइपिंग टाइप है इसलिए यहाँ पर एक लाइन में ज़्यादा है. Control group is the group which is compared with experimental group receive the same treatment. Control group is a specific experiment where the factors being tested are not applied. टेस्टेड को ब्लैक मार्कर से लिखना है. इम्पोर्टेंस, द फर्स्ट 2, 3, 4. इसको यहाँ पर आप लोग की कॉपी में ऑलरेडी से जो मार्जिन लाइन होती है तो आप लोग मार्कर से 1, 2, 3, 4 मार्जिन लाइन में लिख के. अ कंट्रोल ग्रुप इज यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजन मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. मेकिंग डिसीजन को ब्लैक मार्कर से लिखना है. दिस इज प्रोमिनेंट वर्ड. डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ग्रुप. अ कंट्रोल ग्रुप इज यूज टू आइसोलेट अ पॉपुलेशन ग्रुप फ्रॉम द वेरिएबल you are introducing to your test sample or group. It is an essential part of an experiment because it allows you to eliminate these variables which are not necessary for scientific method. It is used to minimize the effect of variable other than independent variable. The next question is finishing line लगा दिया सबने. Question 5, explain how biologists use scientific method to solve the mysterious of address malarial problem. Malaria, a biological problem. Malaria, first is lateral meaning. Here is after answer. आंसर के बाद आप लोग का डायरेक्ट जो है माइंड मैप आ जाएगा. ठीक है, ये आप लोग का माइंड मैप हो गया. आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पर? आंसर. ओके, आंसर. फिर आंसर के बाद आप लोग का ये माइंड मैप आ जाएगा. ये माइंड मैप हो गया. माइंड मैप के बाद आप लोग पर ये हेडिंग्स लिखोगे. ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए. आप लोग का माइंड मैप है मलेरिया 17th century, क्विना माला, बेड एयर, एंड दिस इज इटालियन वर्ड. आउटलाइंस पेंसिल से और अंडर राइटिंग मार्कर से. ओके, जिस तरह इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वैसे ही आप लोगों ने ड्रा करना है, बनाना है माइंड मैप. वैसी ही हर चीज़ करनी है, अदरवाइज जब कॉपी चेकिंग होगी तो फिर आप लोग के लिए खुद मसले होंगे. ठीक है. Malaria, a biological problem. Malaria, lateral meaning. This is lateral meaning. Here is I. The term malaria is derived from two Latin words. Mala mean bad and area mean air. So malaria mean a disease caused by bad air. Bad air, mala and area को आप लोगों ने लिखना है ब्लैक मार्कर से. Observation about malaria. Disease of chill and fever. In ancient time, physicians were familiar with this disease. They describe it is a disease of chill and fever with recurring attacks.
They observed that the disease was more common among people living in low marshy areas. Number 2, 1, 2, 3 को मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को याद करना है. Association of malaria with marshy places. It was thought that the stagnant water of marshy poisoned the air, and as a result of breathing in the bad air, people got malaria. These beliefs lead to the name of disease, malaria. Meaning of malaria, a combination of two Italian words, mala means bed and area mean air. Fourth one is marshes and malaria. Some volunteers mean रहने वाले, drink the stagnant water from marshes. They did not develop malaria. Fifth one, treatment of malaria by using cinchona bar. In 17th century, malaria was a major disease in Europe, so America sent many plants to Europe to be used as a medicine. The bark of tree known as quinquina, used black marker for writing quinquina, was very suitable for curing malaria fever. Some dissonant merchants began to substitute the bark of another tree, cinchona, which closely resembled to quina. Okay, so cinchona bark found to be excellent for treating of malaria due to the presence of quinine in them, and quinine is an alkaloid. Work of Levran. This is 6 point. In 1878, French army physician Levran began to search the cause of malaria. He took a small amount of blood from malarial patient and examined it under microscope. He noticed some tiny living creatures. The organism was given a name, Plasmodium. For major observation about malaria in marshy areas have some relation. Quinine is effective drugs for treating of malaria. 1, 2, 3, 4 को मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है. Drink the water of marshes does not cause malaria. Plasmodium is seen in the blood of malarial patient. Now what is hypothesis? A hypothesis is developed from the ancient observation and the discovery of Levran. Okay, here is Levran. Plasmodium is the cause of malaria. Use black marker for writing the hypothesis. After this deduction, following deduction is drawn from the above mentioned hypothesis. Okay, here is hypothesis. Date. Malarial patient should have Plasmodium. If Plasmodium is the cause of malaria, then all malarial patients, here is patients. Okay, malarial patients, then all malarial patients should be Plasmodium in their blood. Okay, then all malarial patients should be Plasmodium in their blood. The next step was to test the deduction through experiment. In order, again heading the experiment card to test the hypothesis Plasmodium is the cause of malaria. Following experiment should be designed. Experimental group blood sample of 100 malarial patients were examined under microscope, which was labeled as the experimental group. Labeled with the experimental group. Control group, again heading blue marker, blood of 100 healthy people were examined under microscope, which was labeled as control group. रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट हमारे पास है, अगेन यूज ब्लू मार्कर with double underlining. Result of the experiment showed that almost all malarial patients have Plasmodium in the blood, whereas the healthy person had no Plasmodium in their blood. So the above results support the hypothesis that Plasmodium is the cause of malaria. So malaria was taken as a biological problem. तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया. आप लोग फिनिशिंग लाइन लगा दें, ठीक है. अगर आप लोग जल्दी नहीं राइट कर सकते तो यूट्यूब पे जब आप लोग वीडियो ओपन करते हैं तो आप लोग ऐसे एक क्लिक किया करें तो वीडियो स्टॉप हो जाएगी. फिर आप लोग पैराग्राफ की राइटिंग करें, फिर स्टॉप करें, फिर राइटिंग करें, तो इसी तरह आप लोग के लिए ईजी होगी, ठीक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है.